welcome back to the AgriAddict YouTube channel. I am Shreyas Sir, currently pursuing PhD in Processing and Food Engineering Division from ICAR Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. I secured All India rank 6 in ICAR JRF, ICAR JRF SRF examination. Also secured All India rank 11 in ICAR PG examination. Also overall rank 4 in MCAER examination. So today's our topic is previous year question paper of year 2020. Okay, so in yesterday's session we covered 60 questions of 2020 question paper. So like first question is today's first question is a real fluid in which the shear stress is directly proportional to the rate of shear strain, or we can say velocity gradient, is known as. So इसका directly मतलब question है तो Newton and fluid. So basically it follows 1 minute. So it follows Newton's law of viscosity. Okay. So what is Newton's law of viscosity? The stress is directly proportional to the rate of shear strain. So this is nothing but dy by dy. Okay. Mu is nothing but kinematic viscosity, and tau is the shear stress, and du by dy is also known as rate of shear strain or velocity gradient. This is shear stress. This is dynamic viscosity, and this is velocity gradient or rate of shear strain. So इसका example क्या क्या है, like water, air, etc. and non-Newton and fluid which does not obey Newton's law of viscosity. An example like ketchup. Also there are sub types like shear thickening, shear thinning, etc. dilatant fluid. Okay, and ideal fluid is incompressible, non-viscous, irrotational. Okay, basically it does not exist. So correct option is Newton and fluid. So next question is the square root of ratio of inertia force of flowing fluid to the pressure force is known as. So it is again direct question. So it is based on dimensionless number. So first one is Reynolds number. So Reynolds number is nothing but ratio of inertia force to viscous force. So this is not a correct answer. So next one is Froude number. Again it is ratio of inertia force to gravitational force or gravity force. Sorry. And third one is Euler's number. Yes, this is the correct option. And Weber's number is the ratio of inertia force to the surface tension force. Okay, so you have to learn all the dimensionless number like force convection, natural convection, etc. So correct option is Euler's number. So this is all asked like directly question. The flow in which the fluid particles move along the well-defined paths or streamline, and all the streamlines are straight and parallel. Like this is the pipe, and flow is like parallel and straight. So it is the characteristics of laminar flow. Is as in turbulent flow, like there is some turbulence or eddies. Okay, so this is one laminar flow, and it is differentiate or classified on the basis of Reynolds number value. So if R is if Reynolds number is less than 2000, it is laminar flow. If RE is between like 3000, so it is like transition phase. And above 3000, turbulent flow. Okay, so correct option is laminar flow.
So next question is the relative proportion of sand, silt and clay in a soil sample designate. So very simple, like soil texture. Okay, the correct option is B. Again, there are types like loamy soil, sandy soil, coarse particle, rare particle, diameter particle size. Okay, वो भी आपको करना है. Then which of the following is true for the cohesion of soil? So cohesion is nothing but the attraction, internal attraction between particles of similar, same kind or similar type. Okay, and adhesion is attraction between two different kinds of particles. So here the correct option is it varies directly with surface tension. No, it varies inversely with surface tension, and inversely with no. It varies directly with surface tension and inversely. Yes, this is the correct option. As surface tension increases, the cohesion also increases, and as particle size increases, the cohesion, like देखो, अगर particle size, ये this is the two example. अगर पार्टिकल साइज बढ़ी तो बेसिकली कोहेजन जो है वो कम हो जाएगा, एंड जब कम पार्टिकल साइज होगी तो ज्यादा मतलब अट्रैक्ट हो गए और मतलब लाइक बॉन्ड एक दूसरे से हो गए तो कोहेजन बढ़ेगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाटर कंटेंट एट विच soil changes from liquid state to plastic state. So its correct option is liquid limit. So there is like first one is solid state, then this one is the graph where here this is semi solid and this is like plastic. Okay, these are the graph. So first one is solid, then here is shrinkage limit, here plastic limit. Okay, and here liquid limit. So correct option is liquid limit, the water content at which soil changes from liquid state to plastic state. Okay, so correct. Next question is the uniformity coefficient of soil is calculated as. It is directly formalized D60 upon D10. What is meant by D60? D60 is nothing but diameter of 60% finer particle. Okay, and D10 is same, diameter of 10% finer particle. So the correct option is D60 upon D10. This is directly from book. Next one is yes, this is numerical from farm machinery. So maximum productivity of maize is to be obtained with a population of 40,000 plants per hectare at a row spacing of 80 centimeter. So if the seed emergence rate is 80% and the number of seeds drop per hill is 2, so determine the seed spacing. तो हमें seed spacing पूछिए. So first one we have to find effective plants per hill. So यहाँ पे अब क्या है, सीड ड्रॉप पर हिल 2 है, तो 2 एंड इमर्जेंस रेट कितना है, 0 लाइक 80% मींस 0.8. ओके, यस, so it is 1.6 plants. Okay, again row spacing is 80 centimeter means 0.8 meter. Again total hills. Okay, here 40,000 upon 1.6 कितने होते हैं, मैं कैलकुलेट करता हूँ. वन मिनट. आपको मतलब एग्जाम में आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, अभी लाइक कैलकुलेटर रहता भी है, मतलब कैलकुलेशन ज्यादा बड़े नहीं होते.
1 minute. Yes, 40,000 upon 1.6. So this is 25,000. Okay. Now next one is हमें क्या निकालना है? Seed spacing. So next step is हमें अभी एरिया मतलब ये हेक्टर में आया लाइक ओके तो हमें एरिया इन मीटर स्क्वायर चाहिए. सो एरिया ओके सो हमें 10,000 से 25,000 को डिवाइड मतलब 25,000 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो इसका आंसर आता है लाइक 10/25 2/5. So it is nothing but 2/5 0.4. Okay, मीटर स्क्वायर 0.4 मीटर स्क्वायर. हमें पूछा है सीड स्पेसिंग. सीड स्पेसिंग इज इक्वल टू विद इन रोज. सो यहाँ पे दिया है रो स्पेसिंग 0.8 0.4/0.8. So it is like 1/2. So 0.5 meter, like meter square and meter get cancel, meter and meter square, so 1 meter get cancel. So answer is 0.5 meter. So 0.5 meter like 50 centimeter. Okay, 0.5 meter. So okay, so next question is मतलब पहले हमने effective plants per hill निकाला, like number of seed drop per hill is 2. So and seed emergence rate is 80%. So 2 into 0.8 is 1.6 plants. Okay. Next one is total hills. So 40,000 upon 1.6 like 25,000. So next one is area. We have to find in meter square. So 10,000 upon like 1 hectare is equal to 10,000 meter square. Okay. So 10,000 upon 25,000. So it becomes 0.4 meter square. Then row spacing is 0.4 upon 0.8, like 0.5 meter. So in centimeter, 50 centimeter. Next question is find the capacity of field chopper with a throat size of 25 into 5 centimeter, like 125 centimeter square. This is 0.0125 meter square into 10 raised to minus 4 for meter square. Okay. Then at 50 rpm with the help of given information हमें क्या क्या दिया अभी? Number of knives in cutter head 2 knives. Okay, so their number of cuts is per minute like 50 into हमें कितना number of knives कितने है? 2, तो 100. Okay, bulk density of material 500 kg per meter cube. Length of cut 2 centimeter. मीटर में कन्वर्जन किया तो 0.02 मीटर. एंड फील्ड एफिशिएंसी 70%, that is 0.7. सो फर्स्ट हमें निकालना होगा वॉल्यूम फ्लो रेट. वॉल्यूम फ्लो रेट. सो इसका फॉर्मूला क्या है? एरिया into length of cut, area in meter square, length of cut in meter. Okay, मीटर एंड फ्लो रेट है. एंड इसके बाद हमने वो ऑपरेट क्या निकाला है? नंबर ऑफ करेक्ट है, नंबर ऑफ कट्स पर मिनट. नंबर ऑफ कट्स पर मिनट. सो जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो मीटर क्यूब पर मिनट में आ जाएगा हमारा. सो एरिया इज 0.0125 इंटू लेंथ ऑफ कट कितना है? 0.02 मीटर. अगेन नंबर ऑफ कट्स 100. सो इसका कैलकुलेशन करेंगे 0.0125 into 0.02 into 100. So 1.25 मीटर क्यूब पर मिनट. ये अभी पर मिनट में आया है तो हमें पर आर में करना होगा इसका कन्वर्जन. सो अगेन अभी एक मिनट न्यू स्लाइड ऐड करता हूँ. हाँ, सो एक मिनट. ओके, उसके पहले हम लाइक मास फ्लो रेट निकाल लेते हैं.
मास फ्लो रेट। सो हमारा जो वॉल्यूम फ्लो रेट आया है, वॉल्यूम फ्लो रेट मीटर क्यूब पर मिनट में, और जो हमारा डेंसिटी दिया है वो है केजी पर मीटर क्यूब में। सो मीटर क्यूब गेट कैंसर, हमारा 1.25 इंटू कितना था डेंसिटी 500, सो इट इज 500। सो इसका कैलकुलेशन आता है लाइक 500 इंटू 1.25। एक मिनट, यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा गलत हो गया शायद, यहाँ पे 12.5 है, सॉरी 12.5। ओके 12.5। सो इसका आता है 12.5 इंटू 500। एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है। 0.0125 इंटू 0.02 इंटू 100, 0.0125 इंटू 0.02 इंटू 100। यस, सॉरी इसका आता है 0.025। सॉरी, वो मैं कैलकुलेटर गलत इस्तेमाल कर रहा था। सो मीटर क्यूब पर मिनट। अगेन इसका आएगा अभी लाइक 0.025 इंटू 500, सो इट बिकम्स 12.5 kg पर मिनट। ओके, सो अभी ये आया है kg पर मिनट में, हमें कन्वर्जन करना है आवर्स में। सो kg पर आवर्स के लिए लाइक 12.5 इंटू 60, सो इट बिकम्स लाइक 125 इंटू 60 डायरेक्ट कर लेते हैं। 260 0 9 6 1 मिनट, यस 750। ओके केजी पर आवर, और हमें जो इफिशियंसी दी है वो कितनी दी है 70%। सो हमें 750 अपॉन 0.7, सो इसका आंसर आता है बी लाइक 525 kg पर हेक्टर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट ने हमने किया वॉल्यूम फ्लो रेट, एरिया इंटू लेंथ ऑफ कट इंटू नंबर ऑफ कट्स पर मिनट। सो 50 rpm इंटू नंबर ऑफ नाइव्स इन कटर हेड, 50 इंटू 2 100। सो दिस आंसर 0.0125 इंटू, मैंने पहले गलत किया था 125 लेके। सो 0.0125 इंटू 0.02 इंटू 100, 0.025 मीटर क्यूब पर मिनट। उसका कन्वर्जन मतलब पहले डेंसिटी मास फ्लो रेट निकाला 0.025 12.5 kg पर मिनट, एंड देन उसको हमने आवर्स में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 60, सो इट बिकम्स 750 kg पर मिनट, एंड देन efficiency is 75%, so 750 into 0.7. okay, 750 into 70 upon 100, so 750 into 0.7, so it becomes 525. okay, so 525 kg per hectare. So next question is, an engine is operating at 600 rpm, the inlet valve opens at, okay, this is the whole time diagram, TDC and BDC, and closes 20° after BDC. Calculate the time for which inlet valve remain open. So पहले हमें इंजन का स्पीड दिया है 600 rpm, उसको हम कन्वर्ट करेंगे rps में। सो ये आएगा 10 rps। ओके, सो टाइम रिक्वायर्ड 1 upon स्पीड रहता है, सो 1 upon 10। ओके, देन हमें टीडीसी पे ओपन हुआ है, सो टोटल
duration for which total duration for which inlet valve becomes open. So first TDC पे ओपन हुआ, BDC तक ये हुआ 180 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 180 डिग्री प्लस यहाँ क्या क्लोजेस्ट 20 डिग्री आफ्टर BDC, सो पूरा यहाँ तक, सो प्लस 20 डिग्री, सो टोटल 200 डिग्री. हमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द इनलेट वॉल रिमेन्स ओपन. सो इसके लिए 200 अपॉन 360, ये टोटल 360 है, इंटू हमारा पहला टाइम आया था 1/10, सो ये 0 गया, ये 0 गया, ये भी गया, 2/36, सो 1/18, so 1/18 seconds. So correct option is C, 1/18 second. Okay. So next one is arrange the following component of the grain combine harvester in the correct sequence as per the flow of material from the start of operation through different components. So reel, this is all component of combine harvester. So combine harvester, there is all operation simultaneously takes place, like harvesting, threshing, cleaning, separating, etc. Then reel, feeder, conveyor, platform auger, straw walker, and threshing cylinder. Okay. So reel. So first one is reel, like hexagonal shape. They have blades. So it guides and move the standing crop towards the cutting bar. So first one is reel. A, first one is A. Then यहाँ पे ऑप्शन में A कहाँ का है, A and C में. So ये B और D पहले गलत हो गए. So next one is प्लेटफॉर्म ऑगर. यस. सो प्लेटफॉर्म ऑगर का काम क्या होता है, जो सब मतलब क्रॉप कट हुए उसको वो सेंटर में लाता है. ओके. सो इट गाइड्स क्रॉप्स, गाइड स्टैंडिंग क्रॉप इन फील्ड. ओके. फीडर ऑगर or collect the or transfer crops towards center. Okay. So second one C. So अभी देखो इधर A में C है, so यही करेक्ट ऑप्शन है. so हम आगे का भी देखते हैं. Then B, feeder conveyor, it conveys the crop from platform auger to threshing cylinder. Okay. फीडिंग ऑगर का काम क्या होता है, सॉरी फीडिंग कन्वेयर का, it conveys crop to threshing cylinder. Okay. So next one is E, like threshing cylinder. अभी threshing cylinder में जो क्रॉप्स और ग्रेन है वो सेपरेट होते हैं, थ्रेशिंग होती है. देन डी, लास्ट वन इज स्ट्रॉ ऑगर वॉकर, उसमें जो स्ट्रॉ है और ग्रेन है वो सेपरेट किए जाते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज ACBED. Then next one is match the following. Okay, choose the correct answer from the given option. Least one is knife clip. So knife clip is related to like mover. So mover में क्या होता है, जैसा नाइफ का सेक्शन दिया होता है, जैसे मतलब एक नाइफ का सेक्शन होता है और जो नाइफ क्लिप होती है वो नाइफ ब्लेड को सपोर्ट और मतलब प्रॉपरली पोजीशन में रखने के लिए हेल्प करती है. सो इट इज रिलेटेड टू मूवर. सो ए का फोर्थ ऑप्शन है, वो कहाँ का है, लाइक ये नहीं है, ये भी नहीं है, एंड ए सेकेंड ये भी नहीं, तो एक ही बचा हम, तो यही करेक्ट ऑप्शन है. देन थ्रूपुट कैपेसिटी, इट इज रिलेटेड टू थ्रेशर. सो हाउ मच input or grain is threshed by per unit time. Reel index, it is related to again combine harvester. Reel index is nothing but the ratio of reel speed to the peripheral speed, and it is value, reel index की value mostly 1.25 रहती है. ओके. ये भी क्वेश्चन आया था. एंड फ्लेल इज रिलेटेड टू forage harvester. Okay. For cutting, this is like rotating
knives are there for a cutting purpose, rotating knives. So next one is the relation between tractive, the relation between tractive efficiency, net traction coefficient and gross traction coefficient, that is mu g and slippage. Again, this is direct question and the correct option is B. The tractive efficiency is nothing but mu upon mu g into 1 minus s, where s is the slip and mu is the net traction coefficient. Okay. Specific draft upper tillage implement is defined as, again it is a direct question. It is known as draft per unit, draft per unit cross section area, drop of implement per unit cross section area of the furrow slice cut by the tillage tool, like any MB flow, disc flow of the implement. So horizontal component of pull is known as only draft. So correct option is C, draft per unit cross section area. So next one is, which of the following expression is correct for increased draft due to increase in speed? So हमें ये रिलेशन पूछा है, आप जगदीश्वर साय की बुक रेफर करेंगे तो उसमें जो टिलेज एंड टिलेज इक्विपमेंट का लाइक जो चैप्टर है उसमें डायरेक्टली ये इक्वेशन दिया है, ds is equal to do plus k square. So do is nothing but static component of the draft implement. Again, ds is the draft at speed is, yes, and k is the constant depending on machine type, like, and which implement is an operating condition like soil types, speed, etc. So correct option is ds is equal to do plus k square. जो constant है वो मतलब speed के साथ है. Okay. In which condition moldboard flow gives better performance than disc flow? So sticky soil में mostly moldboard flow use करते हैं, जो dry condition होती है उसमें हम disc flow use करते हैं. तो sticky soil के लिए mostly moldboard flow use करते हैं. उसमें different types of moldboard भी रहते हैं, slat type, stubble type, etc. Okay. Then dropper power output of a tractor is always less than power takeoff output, PTO output. Okay. So ऐसा क्यों होता है? There are mainly three factors. Like first one is slippage. Yes, slippage, rolling resistance, and frictional losses. Okay. So due to this, the dropper power output is always less than the PTO output. Okay. Next one is placing a group of seed at equal interval in rows. Okay. There are different sowing methods according to the type of seed. Okay. So here one by one we see broadcasting. Then second one is like dibbling. Third one is drilling. Then transplanting. Again heel dropping. Here is. So in broadcasting there is random scattering or like random application of seeds. In dibbling, like placing seed in hole and covering them. In drilling, in continuous in furrow line in continuous manner. In transplanting, mainly in paddy. Okay, and in heel dropping, placing a seed at equal interval, like row to row equal, row to row spacing. Okay. So correct option is B, heel dropping. So next one is, yes, the flow rate of a particular nozzle used for spraying liquid pesticide is proportional to. So it is again a direct relation. The flow rate is denoted by Q is directly proportional to the square root of pressure of the spray material. Okay. So this is the correct relationship. The flow rate is directly proportional to square root of pressure. Then again numerical on the basis of cost analysis. If the annual fixed cost of a tractor operating a moldboard flow is rupees 90,000, 90,000, the variable cost is 500 per hour
and custom hiring market rate is 700 per hour. So calculate the annual break even hours of used tractor. Okay, so there is formula annual break even hours. So here is annual fixed cost अपॉन जो हमारी कस्टम हायरिंग रेट है, कस्टम हायरिंग रेट माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ओके, सो ये है 90,000 अगेन अपॉन 700 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितने अपने 500 पर आवर. सो ये आया 90,000 अपॉन 200. So 0 get cut, 900 upon 2, so 450 hours. Okay, so correct option is C. In check row plantings method, which of the following condition are to be met? Row to row distance is equal. Yes, check row planting में row to row distance equal होता है. Seed to seed distance, yes, this is also correct. Both row to row and seed to seed distance, yes. So ये both true है, but यहाँ पे एक ही option में है, so C is the correct option. Both row to row and seed to seed distance is same. So next question is, which of the following is not considered under the fixed cost? So there are two types of cost, fixed cost and variable cost. So fixed cost is like same for monthly or yearly purpose. So insurance charges, it is like same for month. Then housing charge like also मतलब like वो same ही रहता है. Then depreciation is the depreciate value, like जो हर साल जो वैल्यू मतलब कम हो जाती है जैसे जैसे हम मशीन यूज करते हैं, तो वो भी लाइक 10% लाइक हम सैलवेज वैल्यू लेते हैं. एंड ओवरहेड चार्जेस लाइक मेंटेनेंस एंड रिपेयर, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ओवरहेड चार्जेस लाइक मेंटेनेंस एंड अदर. सो ये इंक्लूड होता है वेरिएबल कॉस्ट में. सो करेक्ट ऑप्शन इज ओवरहेड चार्जेस. ओके, yes, the value of concentration ratio of flat plate collector. So इसमें जो concentration ratio रहता है flat plate collector का, वो 1 रहता है, क्योंकि जितना वो मतलब aperture होता है उसका एरिया उतना वो एब्सॉर्ब करता है. लाइक दिस इज द फ्लैट प्लेट कलेक्टर. यहाँ पे सब रेडिएशन आते हैं और जो एपर्चर का एरिया है उतना ही ये मतलब एब्जॉर्वर का भी उतना ही एरिया होता है. सो बोथ आर सेम, सो रेशियो इज 1. ओके, yes, the design of operator's workplace in the machine is related to. So it depends on like comfort and like proper alignment. So it is correct option is seat index point. Okay, the design of operator workplace, so it is related to seat index point. The severity of workload, it is all question on the basis of ergonomics. Okay, from farm machinery. The severity of workload is considered heavy when the heart rate of worker is, there is classification like light, second one is moderate, third one is heavy, and fourth one is very heavy. So in light, the heartbeats less than 100 beats per minute. So like normal work done. Okay, in moderate 100 to 125 beats per minute. Okay, in heavy 125 to 150 beats per minute, and in very heavy, here regular interval is necessary while working. Regular rest or break is necessary
and in very heavy greater than 150 beats per minute. So it is like extra or like unfeasible for worker. So here correct option is for heavy 125 to 150 beats per minute. So next one is the most critical वाइब्रेशन ऑफ फॉर अ ट्रैक्टर ऑपरेटर. सो यहाँ पे भी इसका ऑप्शन है 4 to 8 हर्ट्स. ये भी डायरेक्टली मतलब वैल्यू सेट है, इसके मतलब आगे गए तो वो हजार्डस हो सकता है ऑपरेटर के लिए. सो नेक्स्ट वन इज point of no return is related to tractor stability. So point of no return means beyond that tipping point the tractor is not able to like मतलब वो टिल्ट होने से हम बचा नहीं सकते, वो टिल्ट ही होगा. So it is a point of no return is like related to tractor stability. Okay. Differential lock in tractor is used to improve. So first हम differential देखते हैं. So differential is one of the unit from like it helps to change the speed of rear wheel according to the soil condition or terrain. और differential lock में क्या होता है, जो speed होता है वो constant किया जाता है, तो वो किस में like traction of wheel improve करता है. Okay. Then next one is ट्रैक्टर इंजन इज डिजाइन टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क एट अ स्पीड. अभी देखो कार और ट्रैक्टर में क्या डिफरेंस है. जो कार है वो टॉर्क कम और स्पीड ज्यादा देती है, और ट्रैक्टर इसीलिए डिजाइन किया है कि हमें हेवी वर्क्स करने होते हैं लाइक फील्ड में, तो लोअर देन द स्पीड एट विच मैक्सिमम पावर इज डेवलप, मतलब ज्यादा पावर चाहिए. सो ट्रैक्टर लाइक इंजन इज डिजाइन एज पर टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क at lower speed, at a lower speed at which maximum power is developed. Okay. The next question is the exposure limit as prescribed by the Swedish National Board of Occupational Safety and Health for respirable dust is yes 5 mg per meter cube. ये जो वैल्यू है यहाँ तक मतलब हम ये इनहेल कर सकते हैं. ओके. Then next question is maximum noise level from a tractor near the operator's ear should not exceed. ये तो like common है 90 डेसिबल. इसके आगे गई तो like डेंजर ज़्यादा टाइम तक हम उसमें सर्वाइव किए तो हम कान को इंजरी हो सकती है. ओके. और उस पर मतलब इफिशियंसी भी कम होगी वर्क की. देन फ्रिलेरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्ट रेडिएशन. ओके. ये लाइक फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी इंजन से क्वेश्चन है, और जो ग्लोबल रेडिएशन है वो पायरोनोमीटर से हम मेजर करते हैं. Which one of the following is the main combustible component in biogas? So biogas is a combination of methane and carbon dioxide. Methane and carbon dioxide. So methane like 50 to 70% रहता है, and remaining is like 30 to 40% CO2 रहता है. So methane is the combustible component of biogas. Next question is what is the standard value of solar constant? So ये भी क्वेश्चन लाइक 2 to 3 टाइम्स रिपीट हुआ है फ्रॉम 2020 से. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1.36 किलोवाट पर मीटर क्यूब. इसका और एक वैल्यू है लाइक 1353 वैट पर मीटर स्क्वायर. ओके. ये भी ध्यान में रखना. ये भी एक बार मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है. ये पॉइंट मतलब पूरा राउंड ऑफ करके दिया है. सो ये भी ऑप्शन है इसका. नेक्स्ट वन इज हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल फ्रॉम अ बायोगैस प्लांट with the following details. So first one is burner efficiency 60%, methane proportion is 0.8, the heat of combustion of methane calorific value दी है यहाँ पे like 28 megajoule per meter cube, and volume of biogas produced per day is 2.4 meter cube, and conversion factor is 1 kilowatt hour is equal to 3.6 megajoule. So पहले हमें पूछा क्या how much energy will be available from the biogas. So पहले हमें मीथेन का प्रोपोर्शन है 0.8. So अमाउंट ऑफ मीथेन हम निकाल लेंगे.
सो टोटल है 2.4 मीटर क्यूब एंड मीथेन का परसेंटेज है लाइक प्रोपोर्शन है 0.8 सो इंटू 2.4 सो ये आया हमारा 0.8 इंटू 2.4 1.92 मीटर क्यूब ओके। उसके बाद हमें क्या पूछा है, हमें अभी एनर्जी निकालना है, एनर्जी रिलीज सो 1.92 मीटर क्यूब इंटू 28 मेगा जूल अपॉन मीटर क्यूब सो मीटर क्यूब गेट कैंसल 1.92 इंटू 28 सो इसका आंसर आता है 1.92 इंटू 28 53.76 मेगा जूल ओके। अभी हमें कन्वर्जन कर लेना है लाइक किलोवाट आवर में सो हमें इन किलोवाट आवर 53.76 अपॉन कितना है 3.6 ना सो उसका आंसर आता है 53.76 अपॉन 3.6 14.93 ओके। ये आया हमारा किलोवाट आवर में। अभी हमें पूछा क्या है, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल और इफिशियंसी 60% है ओके। सो कहाँ पे लिखूं, हाँ इधर लिखता हूँ। सो एनर्जी अवेलेबल 14.93 इंटू 0.6 14.93 into 0.6 that is 8.96% सॉरी किलोवाट आवर सो 8.96 कहाँ है 16.8 नहीं 8.8 ये सबसे नजदीक है सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो फर्स्ट हमने क्या किया, जो अमाउंट ऑफ मीथेन है वो निकाल लिया, मीथेन प्रोपोर्शन कितना है, जो कंबस्टिबल है वही हम निकालेंगे 0.8 इंटू टोटल 2.4 है सो 1.92 आया। देन एनर्जी रिलीज 1.92 इंटू 28 मेगाजूल पर मीटर क्यूब सो मीटर क्यूब की आंसर सो हमारा एनर्जी आया 53.76 उसका कन्वर्जन हमने किलोवाट आवर में किया बाय डिवाइडेड बाय 3.6 सो ये आया 14.93 और बर्नर का एफिशिएंसी कितना है 60% सो मल्टीप्लाई बाय 0.6 सो करेक्ट ऑप्शन इज 8.96 तो सबसे लाइक अप्रोक्स 8.8 किलो watt hour per day. The next question is the acceptable workload for an average Indian worker with VO2 max of 2.2 liter per minute and calorific value of oxygen is 20.9 kilojoule per liter. So यहाँ पे हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है लाइक जो अवेलेबल एक्सेप्टेबल वर्कलोड है, एक्सेप्टेबल वर्कलोड सो 2.2 लीटर पर मिनट। अभी देखो यस अभी हमने यहाँ पे एक्सेप्टेबल वर्कलोड लिया है तो एक मतलब यहाँ पे बात देनी चाहिए थी उन्होंने, एक एक्सेप्टेबल लिमिट रहता है VO2 मैक्स का सो ये बात है देयर इज वन टर्म एक्सेप्टेबल लिमिट जो होता है वो 35% ही होता है ऑफ VO2 मैक्स का सो ये ध्यान में मतलब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था तो हमें पहले 0.35 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.2 को एंड कैलोरीफिक वैल्यू को हमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है सो इसका जो टोटल आंसर आएगा लाइक 2.2 इंटू 0.35 इंटू 20.9 सो ये सॉल्व करते हैं 2.2 into 0.35 into 20.9 16.093 ओके। कहाँ है 16.0 फर्स्ट ऑप्शन यस 16.1 इसका कन्वर्जन 16.1 किलोजूल पर मिनट सो दिस इज द acceptable workload 16.1 is the correct option। ये ध्यान में रखना एक्सेप्टेबल लिमिट 35% होता है ऑफ VO2 max वैल्यू का। Then next question is which of the following is true in respect of volume, median diameter and
नंबर मीडियन डायमीटर. सो वॉल्यूम मीडियन डायमीटर एंड नंबर मीडियन डायमीटर क्या होता है? मोस्टली स्प्रेइंग में यूज होता है. सो वॉल्यूम मीडियन डायमीटर क्या होता है? जो 50% लार्जर पार्टिकल का वॉल्यूम होता है वो 50% स्मॉलर पार्टिकल के वॉल्यूम के बराबर होता है. सो VMD में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ 50% लार्जर पार्टिकल or we can say size is equal to volume of 50% smaller particle. And in NMD number median diameter में क्या होता है? Number of 50% larger particle और size is equal to number of, मतलब इसमें नंबर इक्वल होते हैं, इसमें वॉल्यूम होता है इक्वल, बस बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है. स्मॉलर पार्टिकल्स. सो हमेशा याद रखना जो वॉल्यूम मीडियन डायमीटर है वो नंबर मीडियन डायमीटर से बड़ी होती है. सो दिस इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज यूज फॉर स्प्रेइंग पर्पज VMD. सुटेबल मेटरिंग मैकेनिज्म फॉर व्हीट सीड इज. अभी देखो ये जो सब मेटरिंग मैकेनिज्म है अकॉर्डिंग टू साइज और जो मतलब शेप होता है या टाइप होता है उसके ऊपर हम यूज करते हैं. तो जो फ्लूटेड रोलर है, अभी व्हीट का साइड छोटा होता है, जो फ्लूटेड रोलर मैकेनिज्म मोस्टली यूज होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, फ्लूटेड रोलर. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अंडर द कंजर्वेशन टिलेज. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है जीरो टिल ट्रेन, क्योंकि जीरो टिल ट्रेन में जो सॉइल जो रहता है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है. तो इसकी वजह से जो कंजर्वेशन मतलब लाइक इरोजन नहीं होता है तो कंजर्व होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज जीरो टिल ड्रिल. कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल रेफर्स टू द टेस्टिंग ऑफ सीड ड्रिल फॉर रो टू रो स्पेसिंग. नहीं, वो तो हम एडजस्ट कर सकते हैं. प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग भी हम एडजस्ट कर सकते हैं. करेक्ट सीड रेट. यस, हमें मतलब पहले पता होना चाहिए कि कितना मतलब सीड लगने वाला है. सो उसके लिए कैलिब्रेशन जरूरी है. सो कैलिब्रेशन इज डन फॉर द टेस्टिंग द सीड रेट ऑफ सीड ड्रिल. उसका भी एक मेथड है, लाइक थ्योरी क्वेश्चन में वो क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब पूछा जाता है और एग्जाम में भी उसके ऊपर न्यूमेरिकल रहते हैं. देन पिक्नोमीटर मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेन. सो इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी. ये भी लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज बायोलॉजिकल मटेरियल में क्वेश्चन है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन. अभी तो 2020 में तो कम आए थे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, पर 2021 में बहुत सारे असर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन एंड मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं, वो भी हम देखेंगे आगे. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज increase in thermal conductivity increases thermal diffusivity, and second one is material having higher specific heat possess lower thermal diffusivity. So हमें यहाँ पे thermal diffusivity का फॉर्मूला पता होना चाहिए या फिर कंसेप्ट पता होना चाहिए. थर्मल डिफ्यूजिविटी, सॉरी, thermal diffusivity. Okay, it is denoted by alpha and the formula is K by rho Cp, where K is the thermal conductivity and rho is density and Cp is specific gravity. Okay, so हमें पूछा क्या है, सॉरी स्पेसिफिक हीट, सॉरी वो लास्ट क्वेश्चन स्पेसिफिक ग्रेविटी का था ना. सो इंक्रीज इन थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज थर्मल डिफ्यूजिविटी, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यस, ये देखो थर्मल डिफ्यूजिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी जो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट. सेकेंड इज मटेरियल हैविंग हायर स्पेसिफिक हीट पोजेस लोअर थर्मल डिफ्यूजिविटी, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए. सो हायर स्पेसिफिक हीट, सो यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो बेसिकली हायर स्पेसिफिक हीट है मतलब थर्मल डिफ्यूजिविटी लो होगी. सो ये भी करेक्ट है. सो करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये. सो नेक्स्ट वन इज
moisture contained by a substance that exerts equilibrium vapor pressure less than that of liquid at the same temperature is known as. So equilibrium moisture मतलब वहाँ पे तो सेम रहते हैं. बाउंड मॉइस्चर, यस इट इज द करेक्ट ऑप्शन. जो मतलब स्ट्रांगली हेल्ड होता है और लो वेपर प्रेशर रहता है तो वो बाउंड मॉइस्चर रहता है. ओके, और फ्री तो मतलब इजीली वो इवेपोरेट हो जाता है. सो मॉइस्चर कंटेंट बाय सब्सटेंस दैट एक्सिस्ट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर लेस देन, लोअर रहता है and strongly held, so buoyant moisture is the correct answer. Next one is 1000, like 1 ton of grain at 10% weight basis, moisture content दिया है, was stored in a coastal region for 6 months. Okay, where grain absorbs 50 kg of water vapor, मतलब add हुआ है moisture, the amount of dry matter contained in the final product. So given total weight क्या है 1000 kg, मॉइस्चर कंटेंट कितना है 10% मॉइस्चर कंटेंट ऑन वेट बेसिस, मतलब वाटर लाइक 10% है ना. सो अमाउंट ऑफ वाटर कितना हुआ 10%, 100 kg, एंड अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर 1000 माइनस 100 900 kg. अभी हमें क्या बोला है कि 6 मंथ के लिए स्टोर किया है एंड 50 kg वाटर वेपर ऐड हुआ है. सो फाइनल वाटर कंटेंट पहला 100 और वो 50, कितना हुआ 150. पर हमें पूछा क्या है द अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर कंटेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट. अभी देखो ड्राई मैटर में तो कुछ कम नहीं हुआ है, वो उसमें मतलब ज्यादा भी नहीं हुआ और कम नहीं हुआ है, मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन था. यहाँ पे स्टोरेज पीरियड भी जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया था. सो व्हाट ड्राई मैटर तो हमारा 900 kg थे, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए. ओके, सो ये ट्रिकी क्वेश्चन था. हाँ, हमें मॉइस्चर कंटेंट पूछा होगा तो वो चेंज हो सकता था, पर ड्राई मैटर तो सेम है. देन at 65% relative humidity ड्राई बल्ब टेम्परेचर विल बी. अभी देखो ये भी लाइक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. कभी भी ध्यान रखना जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहता है वो हमेशा वेट बल्ब टेम्परेचर से लाइक बड़ा ही होता है. सिर्फ एक ही कंडीशन पे सेम होता है, वो बताता हूँ. एट 100% relative humidity, all like dry bulb temperature is equal to wet bulb temperature and dew point temperature. दोनों तीनों सेम होते हैं, पर ऐसा देखा जाए तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि वेट बल्ब टेम्परेचर में हमने जो वेट क्लॉथ होता है वो हम कवर करते हैं बल्ब को, सो टेम्परेचर कम हो जाता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है the dry bulb temperature will be greater than the wet bulb temperature. Okay, next one is which of the following is not a bulk storage practices. So pusa beans, fat silent bukari, all are the like storage in tons. मतलब कवर एंड प्लिंथ में भी होता है पर वो हम इंडिविजुअल बैग में स्टोर करते हैं. तो स्टोरेज इन बैग्स, ओके, लाइक जूट्स और प्लास्टिक. एंड वो लाइक एक गोडाउन में और रेज प्लेटफॉर्म में रखते हैं. देन प्लेस्ड ऑन रेज्ड वुडन प्लेटफॉर्म एंड उसको कवरिंग देम विथ प्लास्टिक शीट और मटेरियल लाइक पॉलीथीन एक्सेट्रा. सॉरी, okay, so
इसको हम कैप स्टोरेज भी कहते हैं. Okay, so correct option is cover and plinth. It is not for use for bulk purposes. So next is Rankine formula used for the calculation of lateral pressure in case of shallow bin. Yes, there are two types of bin, shallow bin and deep bin. So shallow bin में जो plane of rupture है वो grain surface को पहले meet होता है before striking to the opposite side, and deep bin में पहले opposite side को वो touch होता है. So there are also Aris theory and Janssen formula. Janssen formula is used for deep bin. Janssen's formula. And Rankine formula used for Rankine formula के the PL like lateral pressure is equal to WHK. Also K is constant, which is value of sine 1 minus sine theta upon 1 plus sine theta, where theta is the angle of internal friction. Angle of internal friction of grain. Okay. So next one is a bulk storage structure that can be termed as shallow bin. Yes, same top. एक ही topic पे दो question आए देखो. If plane of rupture of stored material meets grain surface before it strike, अभी मैंने बताया. ये देखो like एक minute. Yes, ये दोनों suppose bean है. This is shallow bean मान लो. And this is deep bean. So यहाँ इस लेवल तक सपोज ग्रेन फिल किया हमने, ऐसा समझो. सो शैलो बीन में जो प्लेन ऑफ रप्चर है वो पहले ही ग्रेन सरफेस को टच होता है. ओके, बट डीप बीन में वो ऑपोजिट साइड को पहले टच होता है. ओके, बिफोर टचिंग ग्रेन सरफेस. सो करेक्ट ऑप्शन इज फॉर शैलो बीन मीट ग्रेन सरफेस बिफोर इट स्ट्राइक्स टू द ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड से पहले वो ग्रेन सरफेस को टच हो गया. ओके. Then next question is process of separating the material according to its commercial value. Yes. अभी देखो sorting में भी हम separate करते हैं, लेकिन sorting is nothing but separating the material or product on the basis of or according to physical characteristics. Like size, shape, color, etc. But in grading, all is same, but on the basis of commercial purpose, like market. Okay. इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं, मतलब ग्रेड्स में करते हैं. लाइक ए ग्रेड और फर्स्ट क्लास में अच्छा साइज होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए. देन क्लीनिंग इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ फॉरेन मटेरियल, और वी कैन से अनडिजायरेबल मटेरियल फ्रॉम product, like such as dust, dirt, metal particles, etc. Okay. And purling, yes, this is the one of the unit operation used in milling of purling is used in milling of pulses. Okay. For removal of bran or upper layer. Okay, so here correct option is grading. So next one is also there is one unit operation like scalping. This is the separating of large size particle. Okay. Yes, specific gravity
सेपरेट मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ, अभी देखो इसी साल मतलब 2020 में 2 क्वेश्चन सेपरेटर के ऊपर आए थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर सेपरेट मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी इंटर रिलेटेड है, टेक्सचर के लिए अलेन के लिए मतलब अलग अलग सेपरेटर्स है। ओके, सो यहाँ पे डेंसिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। So next one is terminal velocity of the material is an important property of design for the design of, मैंने कल ही बताया था, जहाँ पे एरोडायनामिक्स, टर्मिनल वेलोसिटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, सो ऑल आर रिलेटेड टू लाइक और न्यूमेटिक, वो सब मतलब एएस से मतलब कनेक्टेड है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज न्यूमेटिक कन्वेयर। जो टर्मिनल वेलोसिटी है वहाँ पे मतलब कांस्टेंट रहता है, वहाँ पे मतलब होल्ड मतलब फ्लो होता है, ओके, पार्टिकल और सब्सटेंस। So the correct option is pneumatic conveyor. Yes. The next question is carrying capacity of the bucket. यहाँ पे material handling equipment पे भी question आया, देखो दो। Carrying capacity of a bucket elevator having 4 buckets per meter, moving at a speed of 1 meter per minute, with the bucket holding capacity of 0.1 meter cube will be. हमें capacity पूछी है, capacity. So simply हमें like 4 bucket per मीटर है, ओके, इनटू हमें स्पीड दिया है 1 मीटर पर मिनट एंड होल्डिंग कैपेसिटी एक पर बकेट की होल्डिंग कैपेसिटी दी है 0.1। सो सब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी। यहाँ पे हम देख सकें मीटर मीटर गेट का आंसर, सो डायरेक्टली मीटर क्यूब पर मिनट में आंसर आ जाएगा। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 0.1 लाइक 0.4 मीटर क्यूब पर मिनट, ये डायरेक्टली सॉल्व करने का था। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, कैपेसिटी 4 बकेट पर मीटर है, क्यों मतलब एक बकेट की कैपेसिटी है 0.1 मीटर, तो 4 बकेट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड स्पीड है 1, सो मीटर मीटर गेट कैंसर, सो डायरेक्टली मीटर क्यूब पर मिनट में हमें कैपेसिटी मिल जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज in case of rubber rollers rotate at same speed, different speed, vibrate at same frequency, vibrate at varying frequency. So rubber roller में क्या होता है, ऐसे दो रोलर रहते हैं और यहाँ से जो पैडी है वो मिलिंग होता है लाइक फॉर रिमूवल ऑफ लेयर, रिमूवल ऑफ हल। सो यहाँ पे ये और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं डिफरेंट स्पीड, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज रोटेट एट डिफरेंट स्पीड, ओके, एंड आल्सो ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे और जोड़ देना है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज टेम्परिंग डीजर्मिंग इज अ मेथड ऑफ, अभी देखो राइस मिल में तो नहीं करते हम, राइस मिल में हम डायरेक्टली विथ हलर और हस सेपरेटर से सेपरेट करते हैं। कॉर्न मिलिंग, यस, ड्यू टू लाइक विस्कोइलास्टिक बिहेवियर, कॉर्न मिलिंग में हम जो ब्राइन और जम लेयर सेपरेट करने के लिए फॉर रिमूवल ऑफ जर्म एंड ब्राइन, ओके, कॉर्न मिलिंग में हम टेम्परिंग डीजर्मिंग यूज कर मेथड यूज करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन इन ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेसेस, ब्लांचिंग तो हम वेजिटेबल फ्रूट्स के लिए करते हैं। देन विंटराइजेशन भी नहीं है, यस, अल्कली ट्रीटमेंट इज द फर्स्ट यूनिट ऑपरेशन इन ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस। सो अल्कली ट्रीटमेंट को ही हम न्यूट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं, neutralization. So it is a major step in which we remove the free fatty acid by adding caustic soda NaOH, okay, to convert them into soap. So इसमें क्या होता है, removal of free fatty acid, sorry, by adding caustic soda,
Okay, NO, sodium hydroxide, NaOH, and to convert them into soap. Okay, so correct option is alkyl treatment. Then next one is question, GAP stands for, अभी देखो जितने भी short form है like related to farm machinery, soil and water conservation and processing में तो बहुत सारे हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है. डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स आपको दे सकता है. गैप स्टैंड्स फॉर गाइड एंड एक्सेलेरेटर प्रोसीजर, नो. ग्रेन एरिएशन प्रोसीजर, नो. गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यस. So good agriculture practices include like from field, less use of fertilizer, proper hygiene condition, traceability, post harvest, proper handling of material. Okay, so good agriculture practices is the correct option. Then next one is collection of internationally adopted food standards and related text presented in a uniform manner is. So FSSAI, it is the Food Safety and Standard Authority of India. Okay, this is not correct. HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point, and GMP, Good Manufacturing Practices. So, but Codex Alimentarius is the commission in which there is all the rules or document are combined for and adopted for food standard, like FAO हो गया है, देन WHO हो गया एंड ISO BS, मतलब सबका कलेक्शन है और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो हैंडल करते हैं. सो कोडेक एलिमेंट्रेस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज मेजर फोर्स ऑफ एक्शन इन केस ऑफ रिट्स मिल. सो रिट्स मिल में लाइक इम्पैक्ट से हम जो मटेरियल है वो हम क्रश मतलब साइमल्टेनियसली क्रश करते हैं और साइज रिडक्शन होता है ड्यू टू इम्पैक्ट. ओके, also in hammer mill impact is there. Okay, so correct option is impact. Yes, next question is most popular fencing for general farm use is. इसका भी like direct मतलब दिया है बारबेड वायर फेंसिंग जो ऐसे रहते हैं ना. 1 मिनट, आप देख सकते हो लाइक गैल्वेनाइज स्टील आयरन की होती है. बारबेड वायर फेंसिंग इज द मोस्ट पॉपुलर फेंसिंग. ओके, मतलब ये सब आंसर लाइक जो ऑफिशियल आंसर के उसके बेसिस पे. ओके, नेक्स्ट वन इज ओके, ऑलमोस्ट वी कवर्ड ऑल 120 क्वेश्चन इन 2 सेशन. लाइक कल भी हमें लाइक 1 hour 13 minutes लगे थे, आज भी ऑलमोस्ट इतना ही समय लगा. लाइक 2.5 hours में हम विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व किए, मतलब पेपर कवर हो सकता है 2 घंटे में. तो और भी प्रैक्टिस होगी तो अच्छे से हो सकता है. लाइक मे बी मतलब और अच्छे से मतलब कवर करूँगा. आज थोड़ा मिस्टेक हुआ वो कैलकुलेशन में, पर लाइक अभी भी न्यूमेरिकल 10 लाइक 5 to 10 न्यूमेरिकल्स हर साल पूछे जाते हैं. 2020 में तो कम पूछे थे एंड आल्सो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी कम थे. एसेशन एंड रीजन तो एक ही था शायद, पर जो अभी है अभी एसेशन रीजन एंड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं. तो उस पर फोकस कीजिए, लाइक आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए. सो उसमें लाइक टाइम बहुत जाता है क्योंकि हमें मतलब दोनों एनालिसिस करने पड़ते हैं स्टेटमेंट. सो पढ़ने पड़ते हैं एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, वो भी नहीं थे इसमें. सो जैसे जैसे ईयर बढ़ता जा रहा है लाइक मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मतलब क्वेश्चन पेपर रहता है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता है. सो हमने तो ऑल 120 क्वेश्चन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो बाकी के 3 ऑप्शन है वो भी हमने मतलब लाइक कवर किए. ओके, मतलब एक ही इसमें आपके 3 से 4 कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं. किसी को भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप मतलब पूछ सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं. और मैं भी मतलब इम्प्रूव कर रहा हूँ. दिस इज आवर फर्स्ट लाइक PYQ 2020. अभी हम 2021 to 2025 वो भी हम करेंगे. सो उसके भी लाइक PYQs हमने वेबसाइट पे अपलोड किए, आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं. ऑल्सो देयर इज मॉक टेस्ट बंडल ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वो भी आप परचेस करके प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसमें हमने लाइक फुल लेंथ भी दिया है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, also with explanation of every question. Okay, so thank you for joining